नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल stockincome.in। stockincome.in पे आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक एंड हम आज आगे चलेंगे अगली कड़ी में अपनी वीकली सीरीज वीकली मार्केट आउटलुक पे। तो इस बार हम बात करेंगे फॉर द वीक दैट स्टार्टिंग ऑन 6 मार्च। 6 मार्च से स्टार्ट होने वाले हफ्ते के बारे में हम बात करते हैं, राइट। एंड उसके बारे में मेरा क्या एनालिसिस है ये हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम आलोक और ये एनालिसिस मैं रेगुलरली करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ मार्केट्स में, और ये एनालिसिस आपसे भी शेयर करता हूँ सो दैट मे बी यू कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ इट। तो मैंने जो जितने भी फैक्टर्स हैं पिछले वीक में और आने वाले वीक में, उसके मैंने डिवाइड किया है दो तरह के फैक्टर्स में। एक तो न्यूज़ और डेटा बेस्ड फैक्टर्स और एक टेक्निकल फैक्टर्स। दोनों को हम देख के एक व्यू बनाते हैं मार्केट के बारे में कि आगे क्या हो सकता है, राइट। वी ट्राई टू मेक इट एज साइंटिफिक एज लॉजिकल एज पॉसिबल। सो अगर हम मेन इंडाइसेस की बात करें तो इस हफ्ता मार्केट, इंडियन मार्केट के लिए तो अगर नेट देखा जाए तो अच्छा ही रहा है। एक्चुअली काफ़ी वोलेटाइल वीक रहा है, ऊपर नीचे काफ़ी गया है मार्केट। अदानी सागा कंटिन्यूज टू प्ले इट्स पार्ट, राइट। बट देन निफ्टी हैज़ बिन अप 0.74%, less than 1% basically. But Bank Nifty has shown some very impressive gain, 3.36%. Bank Nifty थोड़ा सा स्लो चल रहा था, बहुत अच्छा उसने रिटर्न दिया है, बाउंस बैक दिया है, राइट। और वर्ल्ड मार्केट में देखें तो S&P 500 2% ऊपर है ऑलमोस्ट, एंड Nasdaq is also around 2.5% up. So world markets are up and Indian markets have also been in line with that. So in that sense, on a net to net basis, weekly markets are up, but during the week we've seen some movements, right? Okay, so थोड़ा पॉजिटिविटी तो है। FII और DI डेटा की बात करें तो this week FIIs have been buying. They bought close to around 6,000 crores in the Indian markets, but DIs have bought significantly more than 12,650 crores, right? So उससे ज़्यादा की buying उन्होंने की है, but on the whole for the month of March so far FIIs have bought more than DIs so far, right? So point is FIIs have started buying after long. Last month also they bought something, then they again sold, so they were yes and no here and there, but then abhi FIIs seem to be buying little more convinced in the markets, so that is a good news for Indian markets, right? All these figures are in rupee crores, okay. इंडिया विक्स जो है इस बार गिर गया है, काफ़ी डाइव डाउन कर गया है। इट हैज़ गॉन डाउन बाय मोर देन 14% एंड अल्टीमेटली क्लोज एट 12.18%. नाउ विद दिस, while it shows a degree of stability, degree of lack of fear in the market, but at the same time जो traders हैं, F&O traders, especially option writers जो हैं, उनको थोड़ा सा काफ़ी ट्रिकी हो जाता है मार्केट ट्रेड करना. सो माई humble suggestion to the traders is be very careful because the VIX has come to very low levels, right? Okay. क्रूड ऑयल ने थोड़ा सा जंप दिखाया. इट हैज़ बीन फ्लैट फॉर लास्ट फ्यू वीक्स, बट इस बार थोड़ा सा अराउंड 3.5% मोर देन दैट एक्चुअली. क्रूड हैज जंप्ड 85.74 डॉलर्स पर बैरल के लेवल पे क्लोज हुआ ब्रेंट क्रूड. लार्ज रीजन फॉर दिस इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू लिटिल इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चाइना में. तो चाइना में थोड़ा सा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है उसकी वजह से ऑयल इंक्रीज हुआ है ऑयल का, बिकॉज चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड. इंडिया इज नंबर 2. एंड ऐसा भी लगता है कि द डिमांड माइट कंटिन्यू फ्रॉम चाइना, राइट. सो दिस अ प्रोस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम चाइना, राइट. इंडियन इकोनॉमी तो ठीक चल ही रहा है, अच्छा चल ही रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट क्रूड इज मूव्ड अप स्लाइटली, विच इन वन वे shows good in the sense that it shows better economic and industrial activity in the world, but becomes difficult for countries like India. We know India का फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा जो है सबसे बड़ा आइटम इसी में यूज़ होता है. सो हायर क्रूड प्राइसेस नॉट गुड फॉर इंडिया, बट दिस इज व्हाट इट इज. लास्ट 1-2 दिनों में एक्चुअली इंडियन मार्केट्स में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, एंड स्पेशली इन द अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो द रीजंस. So there is a firm called GQG Partners. This is a boutique investment firm, right? US based हैं. इनके जो एक चेयरमैन हैं मिस्टर राजीव जैन. So this firm has gone ahead and made huge investments into the Adani group of stocks, largely Adani Enterprises, Adani Green, Adani Total Gas and Adani Ports. Close to $1.9 billion, जिसका मतलब लगभग 15,500 करोड़. So the big investment they made in Adani groups because they believe that Adani group owns some businesses and assets, especially infrastructure assets, which are very valuable assets, or they will
large amount of traffic passes through the ports or the airports, right? So which they manage. So they see long term value and growth, especially after जब इतना प्राइस गिरा है इनका अदानी ग्रुप्स का, तो काफ़ी उनको ग्रोथ और वैल्यू दिखता है, राइट? सो माय बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन टोल्ड मी दे बॉट समथिंग अराउंड 1450 रुपीज़ per share price of Adani Enterprises. I could be wrong, but I just did some rough calculation. So उसके बाद तो प्राइस और काफ़ी इंप्रूव हो चुका है. So probably they are already in profit. That's what I assume. But none of that. Point is they have shown confidence in the Indian markets. Very big investment they have made, and because of that, Adani Ports और Adani Enterprises दोनों इंडेक्स स्टॉक्स हैं, निफ्टी स्टॉक्स हैं. उसकी वजह से निफ्टी जंप किया है पिछले कुछ दिनों में और मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आई है, राइट? ओके, आइए बात करते हैं टेक्निकल्स की. सो एंड बिफोर आई डू दैट, लेट मी हैव अ वेरी क्लियर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. This video is primarily for educational purposes. I am not a SEBI registered advisor. I am not advising you to buy or sell or do this or that in the markets, right? I am an investor myself. I am a trader myself, and I am sharing my analysis with you for your benefit. अगर आपको कोई भी पोजीशन लेना है मार्केट में, buy, sell, anything, please do your own research or connect with a registered advisor, right? Okay. So ये है निफ्टी का डेली चार्ट. इसमें अगर हम देखेंगे तो निफ्टी हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर्मिंग ऑन अ डेली बेसिस, फॉर्मिंग हायर लोअर लोज एंड लोअर हाइज, राइट? ये लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, राइट? सो निफ्टी इज consistently in a downtrend, right? But बैंक निफ्टी seems to have broken. Let me jump to बैंक निफ्टी for once. बैंक निफ्टी ने अगर हम बनाया तो इस पर लोअर लो नहीं बनाया, higher low बनाया है, right? So you can see it on the screen, but I'll talk about Bank Nifty little later. I'll come back here. So Nifty seems to have taken some good support at 17,250 levels, right? And I feel it may not slip below these levels in the coming week, right? So 7,250 I believe is a good level. अगर ये level टूटता है because of any bad news, 17,000 remains a very strong support for the Nifty. So for the week, my sense is Nifty will trade with a positive bias. 17,000 is the lower end of the range in my opinion, but in fact 17,250 might not break. It is likely to hold, and on the upper side there is a huge resistance around 18,000 also and 18,260. So I believe it should not reach 18,260 in this coming week. अगर हम निफ्टी का ऑप्शंस चेन देखें तो हम देखेंगे कि the highest open interest on put side is at 17,500, which is near to current levels, right? So and there's a huge open interest change option writing, put writing that has happened at that level, right? So this is very clear that the bulls are supporting the Nifty. They don't want it to go down. इस रेंज में 17,500 17,400 पे heavy option writing हुई है and open interest बहुत ज़्यादा है, तो Nifty is unlikely to go down. Whereas on the upper side, on the call side, the highest open interest is at 18,000, which is couple of 100 points away. तो लगता है कि निफ्टी वहाँ पर ही रेजिस्टेंस मिलेगा, उससे पहले शायद इतना रेजिस्टेंस निफ्टी को नहीं मिले. एंड आई नोटेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू नोट दिस सर्कल्स दैट आई हैव ड्रॉन, सी दिस इज इन द मनी. इन द मनी कॉल्स जो है ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, विच मीन्स द कॉल राइटर्स आर running away, leaving their positions. They don't think Nifty will go down. They feel Nifty will might move up, right? Whereas in the money put writing काफ़ी significant put writing was 321%, तो 17,700 पे कल ही हुआ है, right? So in the money put writing means the bulls are expecting the markets to go up and they're putting their bets on it. So very clearly the trend for Nifty for this week is positive. Whether it will turn out positive or not, we don't know. क्या होने वाला हमको नहीं पता, बट हमारा कैलकुलेशन प्रोजेक्शन ये कहता है कि निफ्टी का ट्रेंड जो है स्ट्रांगली पॉजिटिव है ऑन अ वीकली बेसिस, राइट, फॉर दिस वीक. Before I talk about Bank Nifty, let me remind you friends, we are present on multiple social media, including Instagram, including Twitter, right, wherein we keep posting very valuable, hard-made, prepared learnings, micro-learning concepts, right, which will be of which could be of very huge use to you. So please go and subscribe there. You'll find it meaningful. हम on Instagram every day we post market today and tomorrow, wherein हम करीब 5-6 बजे शाम को पोस्ट करते हैं जब मार्केट्स का उस दिन का एनालिसिस एंड नेक्स्ट डे के लिए प्रोजेक्शन. सो दैट आई फील हैज़ बीन वेरी यूजफुल. इट हैज़ बीन मच मोर राइट देन रॉन्ग. फॉर एग्जांपल
येस्टरडे परसों की हम बात करें तो मार्केट्स का जो सेंस था, एवरीथिंग सीम डाउन, राइट, एंड मार्केट्स वर हेडेड डाउन, इट लुक्ड एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, बट आई हैड स्टक माई नेक आउट एंड आई सेड 17,250 unlikely to be broken next day and markets might go up, and markets went up yesterday significantly. So इस टाइप का हमारा बहुत बार हमने देखा है कि हमारा प्रोजेक्शन करेक्ट होता है. So maybe you want to benefit from it, right? Okay. Coming to Bank Nifty friends, again the trend is down since December or Jan, right? So it has been forming lower lows and lower highs, but इस बार जो है higher low बनाया है. That's an important observation, right? So it might signal a trend reversal. Again, this is a medium to short term trend, it's not a long term trend that we're talking about, right? So as per charts, I feel Bank Nifty is likely to face a resistance around 42,000, which is not very far from here, and on the lower side it may not go below 40,000. The technical level is 39,800. It may not go below 40,000, right? And but if it breaks that, another important support is at 39,000. So if something really bad news comes, 39,000 might be touched, but I don't think it's going there also. 39,800 or 40,000 is a very good support for Bank Nifty also. Okay, अगर हम Bank Nifty के option interest की बात करें, see there is a very huge option writing that has happened at 41,000. Market is right now around 41,200 something, right? But 41,000, 200 point नीचे पे maximum open interest है on the put side, which shows again the bulls are playing out here. They are the strong hands and they are likely to prevent the market from going down. ज़्यादा नीचे शायद नहीं जाए. On the higher side 42,000 पे अच्छा option rating है call side पे, and it is likely to face a huge resistance there. So my first level thing is it could stay between 41,000 to 42,000, but that's a very narrow range, so it might slip till 40,000 also, but may not cross 42,000. So Bank Nifty also I am positively inclined for the week, but stronger inclination is towards Nifty. So Bank Nifty positive, Nifty quite positive in my opinion for this week. So that's how I see the week, friends. With that, we'll end today's session, today's module. I hope you find it useful. Thank you once again for being with me, for watching this channel, for your comments, for your likes, and do not forget to share this this channel with other people who you think can benefit from it. और जिन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, आपके जानकार, आपके दोस्त, उनसे ये चैनल शेयर कीजिए. अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता है. और अगर आप हमारी हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा प्रोजेक्शन बहुत सक्सेस रेट, हिट रेट इज़ वेरी वेरी हाई. सो आई एम श्योर यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. विद दैट आई विल टेक यू लीव. थैंक यू वंस अगेन. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद.